आप सबको पता है मेरा फेवरेट फीचर क्या है अबाउट वीडियो गेम्स? ग्राफिक्स। आप एक गेम के ग्राफिक्स देख के ही डिसाइड करते हो कि हाँ ये गेम मेरे इंटेल अल्ट्रा एच डी ग्राफिक्स या 1050 या मेरे 1650 पे चलेगा कि नहीं। ग्राफिक्स ऑफ अ वीडियो गेम इज सच एन इंटरेस्टिंग फीचर। यू सी, जब मैं छोटा था द ग्राफिक्स ऑफ अ वीडियो गेम वर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मेरे पास तब कोई अच्छा सिस्टम नहीं हुआ करता था गेम खेलने के लिए, सो I'd open up YouTube and watch the Rad Brad play all the latest games। और मैं जब भी कोई गेम का गेम प्ले देखता था, the first thing I'd say was भाई क्या ग्राफिक्स हैं ये गेम के। 2013 में मैंने ये द लास्ट ऑफ अस एंड GTA 5 को देख के बोला था। GTA 5 के ग्राफिक्स देख के मेरा माइंड ब्लो हो गया था टू सी GTA गो फ्रॉम लुकिंग लाइक दिस टू दिस। डैम। 2020 में मैंने साइबरपंक देख के ये बोला था, और अब 2025 में मैं ब्लैक मिथ वुकोंग एंड डेथ स्ट्रैंडिंग 2 को देख के ये बोल रहा हूँ। लेकिन ये स्टेटमेंट्स के पीछे का कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब ये स्टेटमेंट 2013 और 2020 में बोला था, तब मैं थोड़ा सा डम था, नाइव था, तब मुझे गेमिंग की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। लेकिन अब 2025 में मैं अब बस थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हूँ। अब मुझे चीज़ें थोड़ी समझ में आने लगी है, एंड नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू दैट ग्राफिक्स इज़ द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन वीडियो गेम्स। I understand the appeal of graphics and why people love it. It's a very visual thing. Our eyes love to look at pretty things, whether that is a scenery or that sky that you like uploading on your Instagram story, or a piece of art. Or when you come across a good looking person, you can't help but notice it. Damn, that's a good looking guy, or damn, that's a beautiful woman. And the graphics of a video game literally वही same concept follow करते हैं. Here is a small test for you guys. जब GTA 6 का पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था, सबसे पहली चीज आपने क्या नोटिस करी थी? द ग्राफिक्स। एंड आई गेट इट, ग्राफिक्स आर रियली अट्रैक्टिव, और आप सिर्फ GTA 6 का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस्ड अबाउट वुकोंग, ग्राफिक्स। फर्स्ट थिंग यू नोटिस्ड अबाउट विचर 4, ग्राफिक्स। फर्स्ट थिंग यू नोटिस्ड अबाउट रेड डेड, ग्राफिक्स। फर्स्ट थिंग यू नोटिस्ड अबाउट गोस्ट ऑफ टूशिमा, ग्राफिक्स। मैं खुद एडमिट करता हूँ, मुझे भी ग्राफिक्स बहुत पसंद है। मेरा सबसे बड़ा रीजन साइबरपंक खेलने का was its world and how beautiful the game's graphics are. But the reason why I continued to play Cyberpunk wasn't for how realistic the water was or for how brilliant the lighting was, but it was for the story and majorly the gameplay. लेकिन अब का आर्यन, just a little bit smarter आर्यन, does not fall for the amazing graphics वाला bait. और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूं मैं? ब्लैक मिथ वुकोंग। मेरा एक दोस्त है, एंड लेट्स से उसका नाम इज सम जेनेरिक एस इंडियन नेम, महेश। और महेश मुझे बोलता है, आर्यन यार अभी अभी ब्लैक मिथ वुकोंग रिलीज हुआ है, पर वो तो मेरे लैपटॉप पे कभी चलेगा ही नहीं। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस द सेम थिंग, वर्ड फॉर वर्ड, द सेम थिंग दैट आई सेड टू महेश। ब्लैक मिथ वुकोंग लुक्स लाइक द मोस्ट बोरिंग गेम आई हैव एवर सीन। अब जिससे पहले आप भड़को, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने ऑलरेडी बेयोनेटा, डेविल मे क्राई और सेकिरो खेल लिया है, एंड वुकोंग इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गेम्स विद 4K ग्राफिक्स मॉड। ब्लैक मिथ वुकोंग इज एन एक्शन एडवेंचर गेम, एंड अकॉर्डिंग टू मी दीज 3 गेम्स आर द पिनिकल ऑफ दैट जॉनरा। सो ऑब्वियसली मुझे वुकोंग उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। एंड हियर इज वॉट आई एग्जैक्टली टोल्ड महेश। देख महेश यार, तुम तो वैसे भी ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम कर नहीं रहे, might as well play Bayonetta, Devil May Cry instead of being sad about not being able to play Black Myth Wukong. Okay. Mahesh is invading the video. Go away. And then Mahesh 2 सेकेंड का पॉज लेके looks me right into my eyes and says, नहीं, मुझे तो Wukong ही खेलना है। और आपको पता है, आप ये पूरा कॉन्वर्सेशन सम अप कर सकते हो वो बस वाले मीम से। महेश who is sad because he will never get to play Wukong, Aryan who is happy because he played Bayonetta, Devil May Cry, Nier Automata and Sekiro. Also, since I'm talking about Sekiro, this part is not in the script. Can someone explain to me why the gaming industry is so obsessed with Sekiro? Like every game is trying to replicate Sekiro. This is Sekiro but with a good story. This is Sekiro plus objectifying women. This is straight up Sekiro. This game is better than Sekiro. Oh what the f is this? ये game तो सीधा सीधा ही Sekiro की कॉपी कर रहा है, मॉडल एंड एवरीथिंग। एक और रीसेंट एग्जाम्पल जो आप देख सकते हो वो है मेटल गियर सॉलिड डेल्टा।
मेरा पीसी इस गेम के मिनिमम रिक्वायर्ड स्पेक्स भी मैच नहीं करता है, बट आई डोंट केयर बिकॉज आई प्लेड द ओरिजिनल वन ऑन अ PlayStation 2 emulator and guess what, that game still looks really good and it's still a lot of fun to play. Like मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो लोग ये गेम का रीमेक बना क्यों रहे। एक्चुअली अब मैं ये बोल रहा हूँ, आई नो क्यों कर रहे थे वो लोग रीमेक, द डच मेंटालिटी। अब कुछ कुछ गेमों में अच्छे ग्राफिक्स होना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2, साइबरपंक, गेम ऑफ थ्रोन्स, सॉरी गोस्ट ऑफ सुशिमा, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, Uncharted, Death Stranding, games that have a strong emphasis on its world and visual storytelling. तब मैं समझता हूँ games like these need good graphics. Like look at this clip. I bet आपको लग रहा होगा कि ये कोई मूवी की क्लिप है, बट नहीं, दिस इज द ओपनिंग टू डेथ स्ट्रैंडिंग 2, जो मैंने अभी तक नहीं खेला है बिकॉज मेरे पास PlayStation 5 है ही नहीं। इट मेक्स मी सैड, बट क्या करें। ये सारे बिग बजट गेम्स हैविंग अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दैट, बट प्रायोरिटाइजिंग ग्राफिक्स ओवर गेम प्ले, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। बिकॉज जिस स्पेस पे टेक्नोलॉजी मूव कर रही है ना, इट विल बिकम ईजियर फॉर अ गेम टू लुक हाइपर रियलिस्टिक। अनरियल इंजन इज अपग्रेडिंग, गेटिंग लाइक सुपर गुड एंड मच मोर एक्सेसिबल। सो कुछ ऐसे गेम्स भी रिलीज होंगे विच माइट लुक स्टनिंग बट हैव वेरी लिटिल टू ऑफर। और इसीलिए द 2025 आर्यन, द न्यू आर्यन सेज गेम प्ले इज मच 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 ग्रेटर देन ग्राफिक्स। अगर मैं आपको मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पिछले 2 साल में द लेटेस्ट रिलीज गेम जो मैंने खेला है इज ओनली Baldur's Gate 3, दैट इज इट। My majority of the time goes in playing the older horror games, the Metal Gear games, which by the way, Metal Gear Solid 2 has crazy good graphics for a PS2 game, and same goes for Metal Gear Solid 3 as well. For example, अगर आप कोई latest Souls games नहीं खेल सकते, जैसे Elden Ring हो गया या Dark Souls 3 हो गया या Sekiro हो गया, now is the time, and here comes the बेशरम वाला plug again, to check out Hollow Knight. And Hollow Knight is just scratching the surface because there are so many great indie games out there, and indie games quite literally define gameplay much greater than graphics. You do not need the super best computers or consoles to experience the best of gaming. Rather than looking forward, try to look backwards. ये statement perfectly sums up what I'm trying to say with this video. You see, gaming in India is at its infancy stage. Like अभी बस शुरू कर रहे हैं लोग गेम खेलना, so it's very natural कि लोगों के पास उतना strong gaming system होगा नहीं गेम्स खेलने के लिए, especially latest games खेलने के लिए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, try to look backwards. I am 100% sure that there are some amazing games that you might be missing out on. हाँ ठीक है, आपके सिस्टम पे Silent Hill 2, Resident Evil 4, MGS3 रीमेक ये सब नहीं चलेगा, बट शायद से ओरिजिनल तो चल सकता है ना। व्हाट द फक मक्खी, व्हाट वाज आई सेइंग? रीमेक्स नहीं चलेंगे तो बट ओरिजिनल वाले तो चल सकते हैं ना। इट्स लाइक दिस, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, वॉच द गॉडफादर फर्स्ट एंड देन यू कैन गो ऑन टू वॉच गैंग्स ऑफ वसेपुर, सरकार, अमेरिकन गैंगस्टर, एनिमल एंड ऑल द अदर मूवीज। डू यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गॉडफादर फर्स्ट, गैंग्स ऑफ वसेपुर लेटर, गॉडफादर फर्स्ट, सरकार लेटर, Godfather first, American Gangster later. And here is where my community can actually help you out a lot. अगर आप comment करते हो कि मुझे Wukong या Elden Ring जैसा कोई गेम खेलना है, I am pretty sure मेरे community के pro tier gamers आपकी help कर पाएंगे. And if not, you can join this channel's Discord server. I am pretty sure you will be able to find some answers over there as well. क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ the appeal of graphics. जब आप कोई latest game देखते हो, yes, they look amazing. Yes, sometimes they have great gameplay as well. अगर आप मेरा एग्जाम्पल देख लो, मेरा पीसी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ये सारे रिसेंट गेम्स को रन कर पाए, बट आई एम नॉट सैड अबाउट इट because there are so many great games that I have never played and I am so happy कि मुझे ये गेम्स पहली बार एक्सपीरियंस करने मिलेंगे. Just the only trade-off is that you need to find a little bit of happiness in playing games which might not look as visually stunning as your GTA 5s or Cyberpunks.
अब अगर आप बोलोगे कि आर्यन खुद तो सारे लेटेस्ट गेम्स खेल लिए, अब दूसरों को बोल रहा है कि बेकार पुराने गेम्स खेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज हिलेरियस, एंड सेकेंडली दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. मैं बस सजेशन दे रहा हूँ. While you're grinding and working hard to buy that PlayStation 5 or PC that you've been dreaming about, you can still keep your interest alive by playing some of the classic games. Because trust me when I say this, some of these games will actually blow your mind. And some of these games are actually better than some of the latest games that are being released. So if you are a low system gamer, remember, rather than looking forward, try to look backwards. And I know it's not necessary to say this, but do not follow this motto for your life. In your life, it should be quite the opposite. Always look forward, like how you're looking forward to buying that dream PlayStation 5 or PC of yours. And I hope you get it soon. लेकिन अब मैं चला MGS1 खेलने on a PlayStation 1 emulator. Bye. Thank you so much to all my members, whether you're a producer tier or a gamer tier. Thank you so much for supporting me. And I know थोड़ा upload करने में late हो गया because I am also simultaneously working on a big scale project for this channel. So look forward to that. And yeah, thank you so much.